बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर अंजलि दहिया। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पैरामीटर एंड एरिया। इंट्रोडक्शन। इन मेंसुरेशन वी डील विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, area, volume, etc. The knowledge of mensuration is very useful in our day-to-day life as we buy first cloth for our shirt by length, second plot of land by area, and milk and petrol etc. by volume and so on. In this chapter we will learn about the perimeter and area of closed figure. Now perimeter. Let us consider a field of rectangular shape. If you start walking around the outer edge of the entire field, how far would you walk? The answer of this question, you will have to find the perimeter of the field. The total distance covered by you gives the perimeter. मतलब यहाँ से start करके पूरा complete करके अगर ये करते हैं तो you have to find out the perimeter. Thus, perimeter can be defined as the sum of length of all the sides of the closed figure. Now, units of perimeter. The unit of the perimeter is same as that of the length. It is measured in meters, centimeters or kilometers depending on the dimensions given. Now, perimeter of rectangle. The perimeter of rectangle is the sum of its length and breadth. Consider a rectangle PQRS with length PQ and SR and breadth QR and PS respectively. Now, perimeter of rectangle PQRS. Rectangle का perimeter हम क्या करेंगे? Length और breadth को add करेंगे. PQ plus QR plus RS plus SP. PQ plus QR plus PQ plus QR. That is SR is equals to PQ and PS is equals to QR. So, 2 times PQ plus 2 times QR. So, 2 common लेंगे, 2 into under bracket PQ plus QR. So, perimeter of rectangle is 2 into under bracket length plus breadth. Now, next is perimeter of square. The perimeter of square is the sum of lengths of its all sides. Consider a square ABCD with equal sides AB, BC, CD and DA respectively. Now, perimeter of square ABCD is equals to AB plus BC plus CD plus DA. और इसकी all sides क्या होती है? Equal. That is all sides are equal. So, सभी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB plus AB plus AB plus AB. That is 4 times AB. So, perimeter of the square is 4 into side. Now, next is perimeter of triangle. Since the 3 sides of a triangle may or may not have equal length, so its perimeter is the sum of the lengths of all its 3 sides. Consider a triangle ABC with sides AB, BC and CA respectively. Now, perimeter of triangle ABC is AB plus BC plus CA. That is the sum of all sides. Now, keep in mind, perimeter of any regular polygon is n into side. N into side means number of sides, where n is the number of sides of a polygon. Now, solved examples. Example करते हैं. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 28 centimeter and breadth is 16 centimeter. If the same wire is bent against in shape of a square, again उसको bend करके क्या बना देते हैं हम? Square. What will be the measure of each side? Solution करते हैं. Since the shape of wire is transformed from rectangle to square, so दोनों चाहे हम कोई भी shape दे, दोनों का perimeter तो same ही रहेगा. So that is perimeter of rectangle is equals to perimeter of square. Perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth and perimeter of square is 4 into side. That is 2 into 28 centimeter plus 16 centimeter. That is equals to 4 into side. 2 into दोनों को add किया 44. 2 into 44 is 88 centimeter. It's equals to 4 into side. तो side निकालने के लिए 4 से divide कर देंगे. That is 22 centimeter. Hence, the measure of each side of the square is 22 centimeter. Now, next example. Find the cost of fencing. Fencing कहाँ करते हैं हम? चारों तरफ. Of a rectangular field 225 meter long and 175 meter wide at the rate of rupees 2.25 per meter. 1 मीटर में फेंसिंग लगाने की कॉस्ट है 2 रुपये 25 पैसे. तो
कुल कितना मीटर है वो एरिया, वो पेरीमीटर हम निकालेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। Perimeter of the rectangular field is equals to 2 into length plus breadth, that is 2 into under bracket 225 meter plus 175, that is equals to 400. 400 into 2 is 800 meters. Cost of 1 meter fencing, 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट क्या है, 2 रुपये 25 पैसे। हमें कितनी फेंसिंग लगानी है, 800 मीटर। सो 800 मीटर की कॉस्ट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2.25 into 800, that is equals to rupees 1800. Hence, the cost of fencing the rectangular field is rupees 1800. Now, next example. Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of 1/2 meter. He lays them in the form of a square. A. What is the perimeter of his arrangement? Figure 1. इस तरह से। एंड बी इज Shelly does not like his arrangement. She wants to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? That is figure 2. C. Which has greater perimeter? D. Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slabs must meet along complete edge, that is they cannot be broken. Now solution करते हैं। A side of each slab is 1/2 meter, that is equals to 0.5 meter. तो ये हमारी स्क्वायर के शेप में है। As shown in the figure, each side of square is made up with 3 slabs. Side of the square 3 slabs हैं तो 0.5, 0.5, 0.5, that is equals to 1.5 meter. And perimeter of square is 4 into side is equals to 4 into 1.5 meter is equals to 6 meter. Now B part, perimeter of the cross, that is sum of all sides. This. So हमने सारी साइड्स को ऐड किया, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, इस तरह से हमने सारी साइड्स को ऐड किया, तो हमारे पास आया 0.5 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 1 मीटर 1 मीटर एंड 0.5 मीटर, सबको ऐड किया, दैट इज 10 मीटर। सिंस 10 मीटर इज ग्रेटर देन 6 मीटर, सी पार्ट, सो द क्रॉस हैज ग्रेटर पैरामीटर। तो और कौन सा हम शेप बना सकते हैं, तो डी इज सिंस टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज 9, सो द फॉलोइंग अरेंजमेंट दिस will also have greater perimeter. Now next example. Find the perimeter of a triangle whose sides are 8 cm, 7 cm and 9 cm respectively. Solution करते हैं इसका। Perimeter of triangle क्या होता है, sum of all sides, तो सारी sides को हमने sum किया, that is 8 cm plus 7 cm plus 9 cm, that is equals to 24 cm. Now next example. The perimeter of regular hexagon is 36 cm. Find the length of each side. Solution करते हैं, क्या होता है, a regular hexagon has 6 sides. Hexagon means 6 equal sides. तो उसका perimeter given है, perimeter of hexagon is 36 cm और उसका formula क्या होता है, 6 into length of a side. That is 6 into length of side. तो 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर बाय 6, दैट इज 6 6 36, 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड, हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is area. Consider the following rectangles. Length 7, breadth 1, length 6, breadth 2, length 5, breadth 3. Each of the above rectangle have same perimeter, that is 16 centimeter. Then why they look so different? The reason they occupy makes them look so different. The reason that they occupy is called, the reason that they occupy is called area, जितनी जगह वो घेरते हैं। Thus, the area can be defined as the surface enclosed by a plane closed figure. Now, units of area. The unit to measure area is
square meter or square centimeter, which can be written as square meter or meter square, or square centimeter is centimeter square. Now area of irregular figure. There is no formula for calculating the area of irregular figures. Irregular मतलब कोई shape नहीं है, right? We use graph paper or square paper to measure the area of such types of figures. Consider the adjacent figure to find the area. Let the area of one square is equals to 1 centimeter square. So the adjacent figure covers first 18 full squares which are marked from 1 to 18. इसमें जितने 1 से लेके 18 तक जितने भी हैं वो complete squares हैं. Second, 5 more than half squares which are marked from 19 to 23. More than half मतलब पूरा square नहीं है लेकिन आधे से ज़्यादा. Now third, 2 exactly half squares which are marked as 24 and 25. Half squares हैं. And fourth is 12 less than half, means half भी नहीं है, half से छोटे एरिया को वो कवर करने हैं. 12 less than half square which are marked from 26 to 37. As a rule, to find the area, we count all full and more than half squares as complete units of square. कि जो full है और more than half है उनको हम एक unit of area complete क्या करेंगे, काउंट करेंगे. Now we count half squares as half units of area. हाफ वालों को हाफ ही काउंट करेंगे. We do not count less than हाफ स्क्वायर्स एट ऑल. जो लेस देन हाफ है मतलब आधे से भी कम है उनको हम नहीं काउंट करेंगे. हेंस एरिया ऑफ अबव फिगर इज फुल स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर्स. कितने हैं, 18 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, 2. तो 1/2 इंटू 2 दैट इज 2 से 2 कैंसिल, दैट बिकम्स 1. सो 23 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 centimeter square is equals to 24 centimeter square. Now next is area of rectangle. Let us find the formula for area of rectangle by drawing a rectangle on a square paper of length 5 centimeter and breadth 3 centimeter. Count the number of complete squares in the adjacent figure. ये हमने सेट स्क्वायर में बनाया है, स्क्वायर शीट में. Consider area of each square as 1 centimeter square. Clearly, it contains 5 into 3 complete squares. So, area of rectangle ABCD 5 into 3 क्या है, length into breadth. तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी स्क्वायर हो जाती है. Thus we can say that the area of rectangle is the product of its length and breadth. So फॉर्मूला क्या बना, area of rectangle is equals to length into breadth. Now next is area of square. Let us find the formula for area of square by drawing a square on a square paper of side 5 centimeter. Count the number of complete squares in the adjacent figure, considering area of each square as 1 centimeter square. Clearly, it contains 5 into 5 complete squares. So, area of square ABCD is 5 centimeter into 5 centimeter, that is equals to 25 centimeter square. Thus, we can say that area of square is the product of its sides by itself, means side into side. So area of square is equals to side into side. Now solved examples, example करते हैं. Find the area of a rectangle whose length is 18 meter and breadth is 3.5 meter. Solution करते हैं. We know that area of rectangle is length into breadth, that is 18 meter into 3.5 meter, that is equals to 63 meter square. Now next example, find the area of a square whose side is 16 centimeter. We know that, solution करते हैं. We know that area of square is side into side, that is equals to 16 centimeter into 16 centimeter, that is equals to 256 meter square. Now next example, Sabina wants to cover the floor of her room whose length is 4 meter and breadth is 3 meter by square tiles. घरों में लगती है ना नीचे tiles. If each square tile is of side 20 centimeter, find the number of tiles required to cover the floor of her room. टाइल का जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर में है और जो हमारी लेंथ और ब्रेथ है वो किस में है, मीटर में है. ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे. नाउ सॉल्यूशन करते हैं. लेंथ ऑफ द फ्लोर 4 मीटर,
क्योंकि टाइल हमारी सेंटीमीटर में है तो हम इनको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. बाय मल्टीप्लाइंग 100 इट इज 400 सेंटीमीटर. Breadth of the floor is 3 meter is equals to 3 into 100 is equals to 300 centimeter. Area of the floor rectangle का है length into breadth that is 400 centimeter into 300 centimeter is equals to 1,20,000 centimeter square. Now side of one square tile is 20 centimeter. अब पूरे एरिया को एक टाइल कितना एरिया कवर करेगी? तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल इज साइड इनटू साइड दैट इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पूरे एरिया को, बड़े एरिया को हम एक छोटे एरिया मींस टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 400. 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 दैट इज 300 टाइल्स. Hence 300 tiles are required to cover the floor of her room. Now next example. Find the area of the following figures by splitting into squares and rectangles. तो हमें figures given है, जैसे इसको हम split कर देते हैं इस तरह से, एक ये rectangle और एक ये rectangle. तो solution करते हैं. A part. By splitting the figure into rectangles we have area of the figure is area of rectangle AFEG. AFGE plus area of rectangle यहां पे हमारा BCDG that is length into breadth. तो फर्स्ट वाले में लेंथ हमारी 7, ब्रेथ है 2, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर. इसमें हमारी लेंथ है 6, ब्रेथ है 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर दैट इज 14 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर. In the same way, B part में by splitting the figure into squares and rectangles, we have area of the figure. इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा rectangle, ये rectangle, ये rectangle और ये हमारा square. Area of the figure is area of square ABCM plus area of rectangle MDEL plus area of rectangle KEFG plus area of rectangle IFGH. तो सभी का स्क्वायर की साइड है 3 इंटू 3, 7 इंटू 1, 5 इंटू 2, 2 इंटू 1. तो सबका आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद करेंगे.